I've been coding for 5+ years and don't get intimidated because I have wasted a lot of time and have went around haphazardly learning every little thing that caught my interest. If I got another chance from 5 years back, I will do it a lot more differently and a lot faster. You see, my problem was that I got my hands on to everything that caught my interest. Game design, be it web development, be it machine learning, I tried a little bit of everything and thus leaving me nowhere. After all this experience, let me tell you how you can start from absolute zero and learn to code really fast and to finally land your dream job. Okay, to begin any journey, we first need to understand what is our goal. Our goal is to land a job. So what are the things that we need? So there are mainly three things. The first thing is DSA, second thing is computer science fundamentals, and the third thing is project. So even if you just do one thing, you have to do DSA to get into a tech interview. But how do you start with DSA? It is honestly really hard for an absolute beginner to start with DSA. There is a prerequisite that you have to understand the basics, the absolute fundamentals of coding through some language. There comes the very first crucial decision that you have to take in your coding journey is to choose कि कौन से language से start करना है. बहुत सारे program languages available हैं and a lot of people will tell you a lot of things, but understand this. Your first program language should be three things. One, it should be very easy to understand. ज़्यादा मुश्किल syntaxes नहीं होने चाहिए, English से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज इट शुड बी वर्सेटाइल. इस पे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होने चाहिए ताकि ये वेब डेवलपमेंट में यूज हो पाए, थोड़ा मशीन लर्निंग के लिए भी यूज हो पाए, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो पाए. एंड द थर्ड थिंग, इट शुड बी एफिशिएंट. ये बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एटलीस्ट अबव एवरेज इन टर्म्स ऑफ स्पीड. एंड ऐसा एक ही लैंग्वेज है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, एंड दैट इज पाइथन. तो हमारा पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड हो गया कि हम पाइथन से स्टार्ट करने वाले हैं, और एनी अदर प्रोग्रामिंग चॉइस ऑफ योर्स. बट एट दिस पॉइंट ज़्यादा लोग क्या करेंगे, कोई इंटरनेट पे जाके कोई कोर्स खरीद लेंगे और उस कोर्स को कभी नहीं खत्म करेंगे, and they will end up complaining about making no profit. That is not the right way to do it. Instead of just buying courses or just watching a lot of tutorials, start writing programs, start following along with the tutorials, and start building small projects. As you will see, you will face a lot of problems that are not mentioned in the tutorials, and through these problems, don't get demotivated. Through these problems, you will learn to solve those particular problems. You will learn 10x more than just the tutorials were teaching. अब ये project based जो approach है, that is the fastest way you can learn to code instead of just watching tutorials. अगर तुम्हें project based way में जल्दी from scratch Python सीखना है, तो you can follow the live streams that I do on this channel. So hit the subscribe button so you can watch the upcoming live streams as soon as they are streamed. After some time, you are good with Python fundamentals, the basic understanding of coding that you have. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं DSA. लेकिन कहाँ से? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ होली ग्रेल वेबसाइट कॉल्ड LeetCode. व्हाई LeetCode? बिकॉज यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे तीन अलग अलग पार्ट में क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं. तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुम वो भी कर सकते हो टॉपिक्स चूज करके. LeetCode को मैं होली ग्रेल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरी दुनिया यूज करती है LeetCode, नॉट जस्ट इंडिया. तो यहाँ पे तुम्हें बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. अगर तुम्हें एक बेसिक टेक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो स्टार्ट विद द 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस, दैट इज अ प्लेलिस्ट ऑन बेसिकली ऑन LeetCode. तुम जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस. जब तुम्हारी इजी क्वेश्चंस 30 to 45 मिनट्स में सॉल्व होना चालू कर दे ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तब मूव आउट टू द मीडियम क्वेश्चंस. जब तुम्हारे मीडियम क्वेश्चंस 40 to 45 मिनट्स में होना चालू कर दे, देन यू कैन से दैट तुम्हारा DSA is at the level that you can take on most of the tech interviews. But are we ready yet for the tech interviews? Not really, because अभी बस एक ही स्टेप हुआ है. Second step is computer science fundamentals. ये तुम्हें कॉलेज में भी पढ़ाए जाते हैं if you are from computer science branch, but again कॉलेज से ज़्यादा सीखा नहीं जा सकता क्योंकि कॉलेज के teaching methods बहुत ही ज़्यादा outdated है. So you have to come to the internet. You can buy some course, you can buy some books, या फिर just watch good playlists on YouTube to learn the main three things of computer science fundamentals, that is operating systems, computer networks and database management systems, also known as OS, CL and DBMS. तो ये चीज़ों के लिए either तुम बहुत ही vastly, बहुत proper understanding के साथ पढ़ सकते हो, या तुम YouTube पे भी CS GATE के लिए जो playlist होते हैं वो देख सकते हो, या फिर और भी tutorials and sessions होते हैं वो तुम देख सकते हो to learn all of this, कि तुम्हें बस टेक इंटरव्यू में जितना चाहिए उतना ही तुम सीखो. Computer fundamentals are also very important क्योंकि 10 to 20% of your time and 10 to 20% of your questions in any tech interview will come from computer science fundamentals.
So number 1 and 2 are complete. Number 3 is projects. Projects क्यों important है? क्योंकि तुम इससे इंटरव्यूअर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो एक डोमेन में. अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो दो चीजें होंगी. तुम्हारा इंटरव्यूअर तुमको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है उनके अपने मुताबिक. बट तुम्हारे पास अगर प्रोजेक्ट होंगे तो you know कि most of the questions will be around those projects only. So you can study the things that are involved in this project बहुत ही deep level पे, ताकि उस पे तुमको जो भी पूछ दिया जाए तुम बता दोगे. चाहे तुमको और चीजें उतना अच्छे से नहीं आती हो, बट तुम्हें पता है कि most of the questions will be around your project only. सेकंड चीज जो होगी कि प्रोजेक्ट अगर नहीं होंगे तुम्हारे रेज्यूमे पे और कंपेयर टू समवन जिसके रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स है, तो इंटरव्यूअर उसको प्रेफर करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर समझेगा कि इस बंदे को टीम में काम करना आता है. ही नोज हाउ टू बिल्ड एक्चुअल स्टफ, नॉट जस्ट फॉलोइंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स. तो अगर तुमने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं और रेज्यूमे में डाल रखे हैं तो दैट गिव्स यू अ ह्यूज एडवांटेज ओवर एनीवन एल्स. सो विद ऑल दिस डन यू आर रेडी फॉर अ टेक इंटरव्यू. सो स्टार्ट अप्लाइंग. एंड अभी सबसे टफ पार्ट आएगा, इज दैट रिजेक्शन. ऐसे बहुत कम चांसेस है दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इन योर फर्स्ट इंटरव्यू. यू विल फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. मेरे केस में भी हुआ था, सबके केस में होता है. यू विल फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस. पहले 5-6 इंटरव्यूज थोड़े खराब जाते हैं. यू पिक अप ऑन स्मॉल प्रॉब्लम्स कि ओके मैं ये बेटर कर सकता था, वो बेटर कर सकता था, एंड यू स्टार्ट रिफाइनिंग. एंड आफ्टर न्यूमरस रिजेक्शंस एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ लक, you will definitely land your job in a very short amount of time.